थोड़ा सा ज़रा आपको बचपन में ले जाते हैं, हम सब के बचपन में। और बच्चे जो होते हैं वो कार्टून के बड़े शौकीन होते हैं। हम जब छोटे थे तो टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर ऐसे कार्टून आया करते थे और उसका भी टाइम बड़ा लिमिटेड होता था। सो उसमें हमें बैठ के वो ज़रूर रोज़ाना हमें कुछ कहते हैं ना वो एपिसोड देखने होते थे, मिस कर देते तो दिन अच्छा नहीं गुजरता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ गई है वक्त के साथ साथ। एनिमेशन फिल्म्स जो हैं उनका बड़ा रुझान है और इंटरनेशनली उसकी बड़ी डिमांड भी है, बहुत बड़ी मार्केट भी है। सो पाकिस्तान में इन दिनों एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ रही है। एक मोहतात अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि दुनिया में एनिमेशन इंडस्ट्री का हजम जो है वो 28 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है और पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स भी इसमें कदम रख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और कुछ पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान को अच्छी एनिमेशन फिल्म्स पर फराहम कर रहे हैं। सो इसी हवाले से टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम टू डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, सिलास बोसिकी, आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज़ करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और हमारे साथ मौजूद है इमरान अजहर। Thank you, Imran, for being with us. And it's an honor to have you both with me today. And your innovative work is very inspiring. And I look forward to hearing more about your experiences and the future projects. So thank you so much once again. Thank you. Silas, I would like to ask the first question to you. What motivated you to come to Pakistan and to actually, step in this kind of industry? Do you see there's a lot of potential and talent in animation industry in Pakistan? Yes, I think there's enormous potential here. We've just done a tour of Pakistan. This is the second time I've been to Pakistan. This trip we went to Lahore as well as Karachi. My first trip here we went to Islamabad, so I've got a pretty good idea of the level of talent that exists here. There's extremely good, as you'd expect, there's extremely talented CGI, which is like computer-generated animation practitioners in small studios, individual creators, etc. But more interestingly, I think, for us, is the fact that there's also a lot of creators that are very, very skilled at 2D animation, the kind of animation that you might see in old Disney or Warner Brothers cartoons, which is something that is potentially is kind of what we like to say is future-proof. So it doesn't age or date. It always has this kind of beautiful tactility to it, and that's why Warner Brothers and Disney cartoons just can keep going. So there is people that can do that here very, very well, which is very, very rare, and that's something that we're really impressed by. And do you believe that currently Pakistan has a large enough audience for animation films in terms of children and adults audience? It's got a very interesting demographic. I'm from Japan, so we've got an aging population here. I believe 60% of your population is kids, basically, or teenagers. It's a much younger demographic here. So in terms of kids' entertainment, I think that there's enormous potential here. But as you pointed out, it's not a huge market. But I think that the stories and the characters here really have international potential for export potential. And I think that the characters and stories from Pakistan, I think, can resonate with international audiences, and that's what we're going to be creating in some of the shows that we're developing right now, is local stories with comic universals that can potentially work elsewhere in the world. For example, EMEA, for example, the Middle East, not just Pakistan, and that's what really excites us about this market. And Imran, what kind of animation films are being produced in Pakistan? And secondly, what do you see for the future of the industry here? तो देखें, पाकिस्तानी इंडस्ट्री एनिमेशन हैज़ अ वेरी वास्ट हिस्ट्री. इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम वादी एनिमेशन, द फर्स्ट पाकिस्तानी एनिमेटेड शॉर्ट केम इन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल. Then we had, if you look at Kids Land, a YouTube channel which has 2 billion views right now, an animated studio based out of Karachi. Then we look at Third World Studios based out of Islamabad, which globally the first movie made on Unreal Engine. The first one. Excuse me. Then we have studios like Moonshot Animation, we have Sharp Beach, Ice Animation, who's been working basically primarily for the North American market, which means the quality exists. But the thing, excuse me, what we want to do is, I think it's because of the weather. Yes, we are both under the weather, having a big road show. So the beauty of this partnership is that we want to tell local stories, regional stories for the global market, and that's why this kind of international partnerships are so important. Okay, so जैसे कि आप अपने ऑडियंस के लिए भी you can speak in Urdu. थोड़ा सा हमें ये बता दें कि एक होता है कमर्शियल पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव,
वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। आई थिंक हम पानी नहीं सही है, ठीक है, शुक्रिया। वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश की जाती है जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से उसमें पोटेंशियल हो। आप समझते हैं वो पोटेंशियल यहाँ पर है, या आप समझते हैं आपका जो मैसेज है, जो सोशल इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, वो ज़्यादा मैटर करते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये वी आर हेयर टू एंटरटेन चिल्ड्रन एंड हम लोग चाह रहे हैं कि अपनी कहानियाँ, रीजनल कहानियाँ, पाकिस्तान की कहानियाँ ग्लोबल मार्केट तक लेके जाएं, जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है एनिमेशन स्टूडियोज़ की, और पोटेंशियल पाकिस्तान की कहानियों का है, सिर्फ पाकिस्तान की कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो ग्लोबल कंजम्पशन के लिए है। हम भी चाहते हैं कि जैसे यहाँ के बच्चे टॉम एंड जेरी की शो देख रहे होते हैं बैठ के, हमारी कहानियाँ भी, हमारे रीजनल की कहानियाँ भी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बस साउथ एशिया और मिडल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीकन की जो हमारी कहानियाँ हैं उनको हम कैसे लेके ग्लोबल मार्केट में लेके जा सकते हैं। और तभी साइलस की कंपनी कस्टम नट्स और बबून एनिमेशन न्यूयॉर्क की कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ मिलकर, एस्कॉप एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर, हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑफिस भी बनाया है कि वी शुड हैव अ प्रेजेंस, जहाँ पे ये लोग आएँ और लोकल टैलेंट के साथ मिलकर इस पर काम करें। Okay, so what kind of collaboration it is? Like, do you plan to incorporate traditional Pakistani cultures and stories into animation film? You're working on that now? Yeah, that is the plan, and we're in development right now. We have a very famous character who's very recognised in Pakistan. For instance, which character? Ooh, can we say that? Like no, it's a bit of a secret right now. Well, we're working on an adaptation of Ibn Battuta. You know the character Ibn Battuta. So Ibn Battuta. yeah, so we're making a comedy adventure of Ibn Battuta that we believe will resonate right across the region, as well as it could potentially work because of, as I mentioned before, because we're incorporating these kind of physical humour into this. We also believe this could work in North America as well as EMEA, Europe. So perhaps it can go beyond Pakistan and the Middle East, and we're really good at that too, by the way. Like, we've always created content with the aim of, because we work in the APAC region, the Asia Pacific region, it's such an ethnically diverse region. We've got like 17 different languages we need to dub our content into. So the shows that we make really do need to be able to cross borders and export very, very easily. So we're really good at making content that travels, and that's the kind of those methods and techniques that we use to do that. We will be deploying on this Ibn Battuta show that we're making. So cat's out of the bag now. Yeah, it was secret. When do you work with international companies? Yeah. Do you face any kind of challenges, or how do you overcome that? Well, we just need to be, we need to be very culturally sensitive, and we need to be, sensitive to local customs. We need to make sure that we have local experts working within our team. So every single cartoon show that we make in the Asia Pacific region, whether it be some other part of South Asia or Thailand or Pakistan, we always have local experts working with us, animators, writers, musicians. So it's not just me and Imran working on these shows, because I live in Tokyo, I don't live in Pakistan, so I need people on the ground here that are experts at the kind of methods and techniques and storytelling that these shows incorporate. Yeah, otherwise it just doesn't work. Definitely. Imran, Pakistani जो youth है, they are in large numbers. They are looking forward to have a kind of stable jobs here. तो नहीं तो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं. इस इंडस्ट्री में कितना स्कोप है? देखिए, बहुत बड़ा स्कोप है. एक तो हम बात करते हैं एनिमेशन, हमेशा हम लोग बोलते हैं कार्टून बन रहे हैं, कार्टून पे क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो. तो एनिमेशन की जो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से स्टूडियोज हैं पाकिस्तान में जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वॉइसिंग कर रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉय कर रहे हैं, और उनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं और उनके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं. दूसरा एक ऐसा स्किल सेट है पाकिस्तानी का जो कि ये फ्रीलांसर्स के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं, खुद बाहर के लोगों के साथ, फाइवर पे, अपवर्क पे. देयर लॉट ऑफ वेन्यूज जहाँ पे ये लोग काम कर सकते. ये ऐसा स्किल सेट है जिसपे आपको एजुकेशन की कम, स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है. तो एनीबडी कैन बी इन दैट प्रोफेशन. और जहाँ तक बात की साइलस ने कि पाकिस्तान में हमें क्या स्कोप है, तो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं. आज भी इनफैक्ट इसके बाद हम माइट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ पे वर्कशॉप कर रहे हैं. हम टैलेंट हंट कर रहे हैं. हाँ, हम लोग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में थे, लाहौर में थे. वी हैव बीन टू सेवरल यूनिवर्सिटीज़. कल हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के जो थीसिस है वहाँ थे हम लोग. वहाँ हमने स्टूडेंट से मिला है. तो वी गोना बी रिक्रूटिंग लोकल टैलेंट, स्पेशली कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट और
مزے کی بات یہ ہے کہ سائلس اور اس کے جو پارٹنرز ہیں جو کہ LA ہالی ووڈ میں اور بربینک میں ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ 180 آورس کی ایک ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں جو کہ ورچوئل ٹریننگ ہوگی پاکستان کے کریٹو کمیونٹی کے لیے جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی چیزیں جو ہالی ووڈ میں ہو رہی ہیں اس کی ٹریننگ ہم یہاں پہ پاکستانیوں کو دیں تھرو ورچوئل ٹریننگ کورسز فار پاکستانی یوتھ اینڈ فار پاکستانی کریٹو کمیونٹی. It looks like you guys have been doing a lot of work here and I hope this will turn out very good for Pakistani and the industry as well. Inshallah. Thank you. Inshallah. Thank you so much, Silas. Thank you so much. Thank you for having this us. opportunity. Have a Really good day. appreciate it. Thank you. ہاں جی سو یہ آپ نے دیکھا جی زبردست طریقے سے انڈسٹری آگے گرو کرے گی لیٹس سی اور بہت اچھی فلمز بھی پروڈیوس اب تک کی گئی ہیں اور پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ اس انڈسٹری میں آ کر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو بہت سارا اسکوپ ہے ادھر پہ اور بہت ساری کریٹیوٹی آپ کی اسکلز جو ہیں وہ اس میں انہینس بھی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملے گا.